once my mom told us कि तुम लोग घर पे तमाशा करती रहती हो, everybody is making videos, why don't you guys just make a video? So we made it, edited it, sent it to her मजाक में, and like it went viral in 2 days. Recently इमरान अब्बास के साथ में भी आपका I think Instagram live आपका हुआ है. If you've heard of that show सुनो चंदा, उसमें नादिया अफगान का बहुत अच्छा रोल है. She's very popular in India also. She sent us messages. Imran Abbas sent us a message saying my mom watches you girls and she's very fond of you. Recently I think शमशीरा के भी आप उसमें गए थे, promotions में आप लोग गए थे. Obviously like रणबीर कपूर से तो हर लड़की मिलना चाहती है, even after he's married, so it was amazing. आपका वाला एक्सपीरियंस हुआ मैं एक्चुअली वहां बैठ के कैसा लगता? तो ये क्रिएटिविटी के साथ में बिजनेस का जो एक कॉम्बिनेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? Let's just be frank, everybody here is to make money also. Yeah, fame is great, you know, the love that we get is great, but you want it to give you some kind of money also. So जब हमारी जॉब से ज्यादा हमें पे करने लगा, then we thought that it's time that we say bye bye to your jobs and do this. Shazma, welcome with me, and the Bajis is very popular. Congratulations for that. Thank you so much. पहला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कभी आपकी ज़ाती जिंदगी में ऐसा होता है कि that आप अपने किरदारों से बाहर ना निकल पाते हो और you keep on talking in the similar manner? Actually all the time. तो basically हम घर में यही करते थे. We used to mimic all the people from Rampur because actually my mom is not from Rampur. तो हम घर में तो ऐसे नहीं बोलते थे, but everybody around us used to speak like that. तो हम लोग हर वक्त वो मिमिक्री करते थे, जिसकी वजह से once my mom told us कि तुम लोग घर पे तमाशा करती रहती हो, everybody is making videos, why don't you guys just make a video? So we made it, edited it, sent it to her मजाक में, and like it went viral in 2 days. जी वो सब मैंने देखा हुआ है. और सुहा apparently आपकी मदर को WhatsApp यूनिवर्सिटी HOD of WhatsApp यूनिवर्सिटी. HOD of WhatsApp यूनिवर्सिटी. Recently इमरान अब्बास के साथ में भी आपका I think Instagram live आपका हुआ है. Yeah, so a lot of celebrities from the Urdu industry. So we had no idea. So we were just telling people to collaborate with us for Suha's wedding. We wanted a nice dress and all. So somebody said, Harish Shakil follows you. Why don't you guys contact him? He's like the Manish Malhotra of, Park. So and then उसके बाद gradually में पता चलता है कि if you've heard of that show सुनो चंदा, उसमें नादिया अफगान का बहुत अच्छा रोल है. She's very popular in India also. She sent us messages. Imran Abbas sent us a message saying my mom watches you girls and she's very fond of you. And now Maria B, who's a very big designer, and very famous in India as well. Rizwan Beg, and Alhamdulillah, the list is endless. They relate with us. They compare us with Umar Sharif, which is a great thing, हम लोग तो मजाक में शुरू किया था, and पता नहीं था कि इतना serious हो जाएगा. That we'll have to give up our careers and then do this. You're an engineer. Right now on a sabbatical because of the baby, but yeah, I was working full time. 7 years or something, I think. I think next year 10 years हो जाएंगे. Recently, I think शमशीरा के भी आप उसमें गए थे, promotions में आप लोग गए थे. Yeah, जी. Thanks to our agency. कैसा तजुर्बा था? It was nice. Obviously, like Ranbir Kapoor से तो हर लड़की मिलना चाहती है, even after he's married. So it was amazing, and it was different from what we see. Interviews तो हम लोग देखते हैं. But आपका वाला एक्सपीरियंस हुआ मैं एक्चुअली वहां बैठ के कैसा लगता है? कैसा लगा? लगा कि कुछ हो गया लाइफ में फाइनली. It was totally unexpected, and even the influencer industry when we started wasn't this big. Now अब तो बहुत इज्जत मिलने लगी. पहले तो लोग मजाक उड़ाते थे कि क्या कर रहे हैं ये लोग. Now those people only come back to us and tell us how good we are. So it feels great. So you have, I think, more than 7 lakh subscribers on YouTube. I think over 230,000 followers on Instagram, and similarly on Facebook as well. Apparently Facebook पे मैं एक वीडियो में देख रहा था सोहा का, that आप लोग regular नहीं है because वहाँ पर खासे comments जो होते हैं वो unsavory होते हैं. Yeah, I think all the good gentry, sorry, I'm very blunt, okay. जो वो Instagram पे आ गए हैं, and all the जैसे अगर हमारे कोई रिक्शा वाला है, ड्राइवर हैं, ये सब हैं, ये लोग Facebook पे, and those people, the kind of comments we get and the kind of hatred we get is
crazy. Hatred from our own community, you know. जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी, सबसे पहले ये दोनों बहनें खड़ी होंगी. Comments like these. So we finally decided that we will just let it go and not post on Facebook. Only 2 years, I think, for you guys. Only 2 years. Initially, first 6 months was so tough that, you know, मतलब like we literally thought we'll just stop making any videos. Like हो गया बस, ठीक है. हम लोग की भी गलती है. You only focus on the negative part. अगर 99 अच्छे comments है और एक गंदा comment है, then you'll only focus on that. That will just hit you throughout the day कि यार ये क्या लिख दिया, ये क्या बोल दिया. But the kind of love that we got, उसने बहुत ज्यादा हमें मोटिवेट किया. You know, people sending us messages. हम कोरोना में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ. मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, बट मैं आप लोगों का वीडियोस देखता हूँ या देखती हूँ और उसकी वजह से मैं बहुत साल बाद हंसी या हंसा. यू नो, वेरी वेरी इमोशनल कमेंट्स. एंड यू नो, दादी नानी भी देखते हैं और पोता पोती भी देखते हैं. पेरेंट्स तो देखते हैं, यू नो, बिकॉज वी हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स. सो वी नेवर थॉट दैट, यू नो, इतना ज्यादा टच करेंगे हम लोगों की लाइफ्स को. एंड स्पेशली द पीपल who you know, the girls who got married कि कनाडा चले गए, in लंदन चले गए, बहुत साल से नहीं आ पाए हैं. और before partition people who were from our city रामपुर who shifted and उनके ग्रैंड पेरेंट्स वैसे ही बोलते हैं, पेरेंट्स वैसे ही बोलते हैं. तो उन लोग को इतना नॉस्टैल्जिया होता है हमारी वीडियोस देख के. So that's the only thing that you know, that drove us कि चलो ठीक है, नेगेटिविटी को छोड़ते हैं, just concentrate on the good things. That's amazing. मैं आपकी काफी वीडियोस मैंने आज देखे. मैंने पहले भी आपकी वीडियोस देखे हुए, मैंने इंटरव्यूज भी आप लोगों के कुछ देखे आज. मैं एक बात ये सोच रहा था कि हम लोग बहुत ही आई थिंक दिलचस्प से दौर में इस वक्त हैं कि काफी जो न्यूज चैनल्स हैं, दे आर पेडलिंग अ सर्टेन नैरेटिव अबाउट मुस्लिम वुमेन, कि हिजाब को लेकर ट्रिपल तलाक है और you know, बच्चे हैं और परसिक्यूटेड हैं और यू नो अनएजुकेटेड. लेकिन आप जो हैं वो सारे जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, आप दोनों बहनें जो हैं, you're breaking those stereotypes blatantly and you're popular as well. आप लोग you don't shy away from your cultural thing, because आजकल एक ये भी है कि that बहुत से लोग जो हैं वो इंशाल्लाह माशाल्लाह बोलना उन्होंने बंद कर दिया है और उर्दू का यूजेज कम कर दिया है to show their loyalty in a way types. But you are breaking those stereotypes, and which is very refreshing as well. ये आपने consciously किया है या फिर आपको लगता है कि that this is something that comes naturally to you? आप पठान हैं तो मतलब पठान किसी से डरते नहीं है? तो ये बात तो हमने पापा से सीखी है कि डरना किसी के बाप से नहीं है, और डरते तो है नहीं. माय मॉम इज अ सैयद, बहुत डरते हैं उनके घर में सब लोग और बहुत ही सीधे साधे लोग हैं. तो मेरी मॉम यही बोलती है कि बाप और बेटियां किसी से नहीं डरते. तो वो तो दैट्स देयर. We are not scared of anything or anyone, and we are what we are. So like now we started covering our heads, which we did not do initially. So now the thing is कि लोग, some people say, उसमें भी लोगों को problem होती है that you doing it just because आप लोगों को different लगना. It's not an easy thing, okay? All the girls like to show off their hair, but we want to show the world that without dancing, without using bad words, without shedding our clothes, without doing any vulgar comedy, we can still do something, and we are alhamdulillah able to do. And I don't know about politicians and the news channels, but we have a lot of non-Muslim following. They love us. And हमारी recently video 1 million hit करने वाली Instagram में, जिसमें दिखाया है कि एक मुस्लिम फैमिली में जब एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड आती है, and then she's trying to speak in Urdu. We did it with a very famous comedian. She's an actor, Shirin Sewani, and she's become that friend. और वो 1 million पहुंचने वाली like within 2 weeks. तो I think people, उनको अभी तक ये सेट इन नहीं किया है ये पॉलिटिकल एजेंडा जो है. अदरवाइज आई थिंक people are accepting us for this. So इसलिए हम लोग को नहीं लगता that we are actually breaking any stereotype and all. हाँ, लेकिन being Muslim girls and belonging to a small city, दो हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका. they are the ones who are motivating us. But हाँ, there are relatives, there are other people, but that didn't stop us. दूसरा पहलू ये है, जैसे आपने बताया कि फेसबुक पे जो आपको कमेंट्स आपको मिलते हैं कि that जहन्नुम and all that stuff, which is another extreme. तो बेसिकली जो पोलराइजेशन, जो एक्सट्रीम पोलराइजेशन जो इस वक्त हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो है वो जो एक क्रिएटिव लोग हैं जो कि सिर्फ लोगों को हंसाना चाहते हैं, उनको एक मुस्कुराहट का जरिया बनना चाहते हैं, so they are getting caught in the crossfire from both sides. They are getting, and sorry to cut you there, if we have to be very careful. Like मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ. So basically there are two festivals, एक है क्रिसमस और करवा चौथ. So करवा चौथ पे मैंने एक पोस्ट शेयर किया जो राज कुंद्रा ने शेयर किया था कि वो जब औरतें उस नेट के थ्रू देखती हैं, सीप के थ्रू, तो उनको समोसा, कचौरी, पकौड़ा ये सब दिखता है उनके हस्बैंड के फेस के अलावा. तो when I reshared it, it created a big controversy. You're not respecting it and you're making fun of it and blah blah blah. Though it was a viral meme, okay. Then we had to delete it and we had to apologize. Then so there's a character of mine that I play. It's called Shaista. She's a very naughty 10-year-old girl. तो मैंने कहा we went to dinner. वहाँ पे क्रिसमस ट्री थी, तो मैंने कहा सबको मेरी क्रिसमस. And that created even a bigger controversy. Like कि मेरी क्रिसमस का मतलब है you accept that Jesus is the son of God and blah 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 and blah blah, which I had no clue about. I myself went to a convent school and this is the story that I heard for the very first time कि ये क्या है. आपकी जिस तरीके की पॉपुलैरिटी है वो across the border है. अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग आप पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक जो कल्चर आप जो शोकेस कर रहे हैं तो वो उससे बहुत से लोग उससे रिलेट कर पाते हैं. एंड वन ऑफ द इश्यूज इज दैट आजकल उस कल्चर को शो करना जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है. somehow it is not fashionable anymore. Absolutely. फिल्मों में भी हमने देखना कम कर दिया है, टेलीविजन में भी बहुत कम हो गया, तो वो एक तरीके से रिफ्रेशिंग लगता है. आपके लिए कितना जरूरी है कि आप अपनी बात को अपने कल्चर के जरिए, अपनी जो आपके जो जुबान है उर्दू के जरिए, साथ में आसमान पर जो मुहावरे आप लोग जो यूज करते हैं वो बहुत टिपिकल यूपी के मुहावरे हैं जो कि बहुत से लोग इससे रिलेट कर सकते हैं. वो कितना जरूरी है कि that you stick to your beliefs and your core background that you come from? Because we tried a lot of new things and they didn't get accepted the way, and I think it is very important कि जिस वजह से हम famous है, we keep doing it. So we did it to show that we can do other things also, but लोगों को वही देखना है. They come back to us and they tell us उन्हीं पे वीडियो बनाए, make video on शब्बो गलफशा, make video on शाइस्ता कायनात, make video on खाला दद्दो, and they want to see that. They enjoy what we do, other things also, but they really want to watch all that. वही क्योंकि missing है, and that's what they're getting from us. तो और हमारे बाद there are a lot of videos I'm seeing कि Muslim girls are making, they're using the same language, the same kind of setup. Like we never wear wigs. I'll rather use a talcum powder on my head to become dadi, and they want to see that. Usi tarah se, and they're also getting very popular. So it feels very nice that we are the pioneers, and it also feels like कि लोगों ने हमें नहीं छोड़ा because of new people coming. So इसीलिए it is very important we give them what they're here for, And someday I hope कि YouTube को दिखे कि यार ये बहुत जल्दी grow कर रहे हैं, and we must produce it for them. Because a lot of people now say आवाज नहीं आ रही, साउंड में प्रॉब्लम है, ये है वो है. That we have to tell them it's not a Netflix production. हम घर में बनाते हैं, आप प्लीज इसी में खुश हो जाओ. Because I have to script it, edit it, shoot it, write, and then upload it, and then reply to the comments, and then हर वीडियो जब अपलोड करते से पहले लगता है ये पिछली वीडियो से ज्यादा अच्छा करेगी नहीं करेगी, because हमने इतने अपने लिए इतने हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं. And I believe आप iPhone से आप लोग शूट करते हैं. Right. We have seen जैसे भुवन बाम फॉर एग्जांपल, उन्होंने भी मोबाइल से ही उन्होंने एक पॉपुलैरिटी हासिल करी है. और जब उन्होंने नॉर्मल कैमरे से जब उन्होंने शूट करना शुरू किया तो he was trolled for that. So आपको लगता है कि ये जो आपकी जो शुरुआत आपकी अगर जैसे मोबाइल फोन से हुई है और जिस तरीके का आई थिंक बैकग्राउंड है सोहा का, फॉर एग्जांपल शी इज फ्रॉम MCRC. So you will retain that. And how does Soha's background from MCRC contribute to the production of the videos? So basically, when we were young, so I'll start from Soha wali part pehle. Soha was a very bright kid and I was a very very shy kid. Like till date, I shoot my part akele sabko bahar nikal ke, okay. And Soha she has always been very
confident, you know, school में कमोलिका बनती थी, and you know she was like in class 3 and she used to be very famous and everybody knew her, and उसने mass comm कर लिया. But initially when we started this, I always wanted to do stand up comedy, but I never had the courage. I had stage fright. But anyway, this helped me really. This was like a dream for me. And Soha ke liye to khel tha, you know. She's extremely talented, spontaneous, you know. I just tell her ये scenario है, उसको कभी script की जरूरत ही नहीं पड़ती. She's very extremely talented. तो वो तो ऐसे ही खेल खेल में लेती थी. एडिटिंग भी करती तो उसमें इतने फ्लॉज होते हैं कि वो मुझे ही करना पड़ता है. तो मैंने उसे बोल दिया कि भाई तुम बस you become an actor, let me do everything else. तो उसका एमसीआरसी का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सिर्फ इट इज ओनली वो शो ऑफ करने के लिए अच्छा है, वो नहीं करती. सो आपके जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो उससे प्रिसिशन में कुछ, प्रिसिशन लॉजिक उसमें कुछ हेल्प होती है? लॉजिक में तो बहुत फायदा होता है उसमें. लाइक इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपको परेशान करता है तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, and you know it is easier for me to learn softwares and also, इसलिए मैं बोलती हूँ मैं ही कर लूंगी. मैंने आपके YouTube के शॉर्ट्स काफी देखे हैं, Instagram का obviously reels is something that is extremely popular right now. Sorry to cut you, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने देखा. I'm feeling great. Thank you so much. No, I think research तो important है, but what I personally found very impressive was कि that बहुत बार क्या होता है कि लोग थोड़ा सा laid back हो जाते हैं, you know, when they get success. So long format of YouTube में फिर थोड़ा सा लोगों को एक laid back हो जाते हैं कि that you know this is something that we are getting success from, and जो shorts हैं उसको आप monetize भी नहीं कर सकते हैं, तो shorts में डालने का क्या मसला है. लेकिन shorts से आपको subscribers मिलते हैं because once they go viral. Right. तो because YouTube का जो algorithm है तो वो shorts को बहुत promote करते हैं. Right. So ये सब चीजों को समझना, you know ये सब चीजों को समझना भी है जो है वो I think important है. तो ये creativity के साथ में business का जो combination है वो कितना important है आपके लिए? Consistency is so important. It's a full-time job. So basically I was giving 10 hours to my job. Then I was giving 3-4 hours to this. And then you have your social life also. So I actually went into depression for some time. And then I took 2 months off from everything because if you become a content creator and you reach a certain level, I think then you really need to give it up. I wasn't giving it up because initially we wanted this seriously. Abhi tak, like 6 months back tak, we were like karte hain jab tak masti hai, but then we got an agency, then we started getting ads and we started making, you know, technically it is easier money. I won't call it easy money, but it is easier than your 9 to 5 job, which is actually 9 to 9, it's never 9 to 5. So uski wajah se now I finally decided that okay, it's high time that you become a content creator and you know, concentrate on this, because this is what I'm better at than engineering. This is what I'm you know, I feel nice, so I need a job jo roz nahi ho, you know, rather than very monotonous job. I can't do it. Then I gave it up. I'm so and I, we both are focusing full time on this right now. So I think anybody who wants to do it has to give up everything. अगर आप एक certain level पे पहुंच गए हो या जाना चाह रहे हो, जैसे अब 7 लाख हो गया, now to make it 1 million we really need to work hard, you know. ऐसे नहीं आएगा, and if it starts to pay you well, I think let's just be frank, everybody here is to make money also. Yeah, fame is great, you know, the love that we get is great, but you want it to give you some kind of money also. तो जब हमारी job से ज़्यादा हमें pay करने लगा, then we thought that it's time that we say bye bye to your jobs and do this. Now एक मैं आपका वीडियो देखा था, उसके अंदर एक डायलॉग है कि that जो शौहर का पैसा है वो भी हमारा है, हमारा पैसा भी हमारा है. सच नहीं है ये? बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल I think ये मेरा सवाल आपसे ये था कि that औरतों के लिए कितना जरूरी है financially independent होना, especially like say Muslim women, and to actually take pride in that. बहुत ज़्यादा जरूरी है, because it was an example set by Prophet Muhammad and a lot of other ladies who were very very educated Islamic history में, but unfortunately हमारी society वो उठाती है इस्लाम से जो उनको लगता है उनके लिए convenient है. Let's call that patriarchy, कि भाई वो ऐसे करते हैं कि education नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हाँ औरत घर में रहे, बोलते हैं. I think it's the most progressive religion. My nana is a professor of Arabic. He promotes all his daughters are highly educated. My mom did journalism in 89. And सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं होता कि नहीं हमें मर्द का पैसा नहीं चाहिए, हमें अपना पैसा चाहिए. You don't know, your husband might die, he might become paralyzed, you might get divorced,
anything can happen. So you really need to have a skill. जरूरी नहीं है पैसे के लिए, but what if it makes you happy? You know, what if you don't want to while away your time watching TV or YouTube? You want to do something that makes you happy. So my mom always pushed us कि नहीं, करना है करना है करना है, and you can't sit at home. And इसीलिए मैं तो बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ. इफ आई सी अ लॉट ऑफ लड़कियां आती हैं हमारे पास जानने वाले में, कि हमें नहीं करने दे रहे हैं, हमें नहीं पढ़ने दे रहे हैं, एंड आई सी कि लड़कियों में टैलेंट है बट पेरेंट्स कांट अफोर्ड, सो दे जस्ट इन्वेस्टिंग इन द बॉय एंड बॉय इज वेस्टिंग देयर मनी. अब हम कोशिश करते हैं कि जितना कर सकते हैं लोगों को समझाएं कि भाई No, पढ़ाओ. definitely. I think that social message is definitely there.